गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। It's 7:30, so let us begin our evening session. This is Civil Services Academy, Devghar, Jharkhand. Myself, S.K. Tiwari, IAS retired. यहाँ आपको मिलेगा सिविल सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, उसके जीएस पेपर 1 दैट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी और एमसीक्यूज के माध्यम से आपका अभ्यास एवरी डे, rather I should say every evening at 7:30 you will get 10 to 15 important questions with respect to current affairs as well as the general studies. So dear aspirants, let us begin our evening session. Dr. Subhas Kashyap, a recipient of the Padma Bhushan Award, Padma Bhushan Award के प्राप्त करने वाले मिस्टर समिंदर सिंह जी आ गए। वेरी गुड इवनिंग, वंडरफुल। पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97। सुभाष काश्यप, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर ओ यार। ओके, I am starting my preparation, please guide me. Yes, well, आप किस प्रकार के गाइडेंस की बात कर रहे हैं? अगर आपने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, साक्षी वेरी गुड इवनिंग, तो बस सिलेबस, पीवाईक्यूज और जो एनसीईआरटीज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बस उसको लेकर के चल पड़िए। आई हैव नॉट स्टार्टेड, बस स्टार्ट कर दीजिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। ओके, और अच्छे से शुरुआत कीजिए, और जहां कहीं कठिनाई हो तो फिर आप बताइए। प्लीज टेल मी हाउ टू प्लान इनिशियल मंथ्स। यस, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। ओके, यू शुड गो थ्रू द सिलेबस, द पीवाईक्यूज, एनसीईआरटीज and the standard books. Mr. Alam, very good evening, very good evening. So here comes the question. Dr. Subhas Kashyap, a recipient of Padma Bhushan Award, passed away at the age of 97. Who was he? A geologist, B. classical dancer, C. politician, and D. journalist. Are you aware with this news? आपने अगर समाचारों में पढ़ा होगा 5th of June, तो आपने इसे निश्चित रूप से देखा होगा। So C is the answer. He was a politician, an eminent Indian constitutional expert. Okay, और IIT Bombay, currently pursuing my MBA from IIM Kolkata. Very good, very good. Now it is Kolkata, not Calcutta. ओके, कलकत्ता अब वो नहीं है, कोलकाता है। इट्स नॉट सी, इट्स के। सो यस, यू begin your preparations, and wherever you find some difficulty, doubts, you please come right in chat box. I will resolve your issues, certainly. So dear aspirants, he was also Secretary General of Lok Sabha from 83 to 90, Dr. Subhas C. Kashyap. Now let us see this very question. This is equally important. Which of the following countries will build the world's first nuclear dustbin? Nuclear dustbin. Yes, Mr. B.K. Singh ji, good evening, very good evening. I am placed in a big 4 but planning to leave it. It is viable or UPSC? Big 4, I fail to understand. I am placed in a big 4. What does it mean? Okay, so please make it clear. Which of the following countries will build the world's first nuclear dustbin? A. India, B. Finland, C. Japan, and D. Australia. So what should be the answer? और आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो उसके आगे हम okay, so B is the answer. Finland. Finland is building the world's first permanent nuclear dustbin known as the Onkalo repository. Onkalo, O-N-K-A-L-O,
on Callo repository. So UPSC may put a question, okay, starting from on Callo. What does it mean? Repository, okay, or personal questions should be avoided here. Okay, 50L package, it's up to you. Okay, because I am not personal advisor. Okay, I am simply IAS retired. So please continue with the new questions, that is prelims. Okay, only for prelims examination MCQs. So आपके पर्सनल बातों पे हम क्या गाइड करेंगे, ये डिपेंड्स ऑन, और घर में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे बातचीत करिए. Which of the following countries has been elected to the United Nations Security Council for the first time? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है. सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, फॉर द फर्स्ट टाइम. ए किर्गिस्तान, बी नेपाल, सी जिम्बाब्वे एंड डी पुर्तगाल. अब आपको बताना है. ओके, तो यहाँ पे व्हाट शुड बी द आंसर? व्हिच ऑफ द Mr. O. Sityar, please take my contact number, that is 9934739191, and make a call after this class. I will make it clear, whatever you are asking. Okay, so which of the following countries has been elected to the United Nations Security Council for the first time? So dear aspirants, now let us see. Yes, Vicky Singh ji, your answer is correct. Kyrgyzstan, the country that has been elected to the United Nations Security Council for the first time is Kyrgyzstan. So Vicky Singh ji ने बिल्कुल correct answer दिया. आइए चले. This is Chumur village, CHUMUR, has been designated as India's first model border village. First model border village. Shall I call or text you? You may make a call. Okay, no problem. 9934739191. After the class, that is 8:30. Okay, 8:30, you may call. So, dear aspirants, now model border village. Where is it located? A. Andhra Pradesh, B. Ladakh, C. Bihar, and D. Manipur. So, dear aspirants, what are the timings of this class? This class commences at 7:30 up to 8:15, sometimes 8. Okay, so 30 to 45 minutes. So 8:30, you may make a call. Thank you. So, dear aspirants, चुमूर विलेज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट मॉडल. अब आपको बताना है कि ये किस स्टेट में है, और ये स्टेट में है. ओके, तो ये डियर एस्पिरेंट्स लद्दाख. सो लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना laid the foundation stone for the first model border village at Chumur, located at an altitude of 16,700 feet along the India-China border. अब ये इसी का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करके वो क्वेश्चन बनाएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि यही सारा मटेरियल उसमें है. सो डियर एस्पिरेंट्स, recently what rank has India attained as the world's largest solar energy development market? A first, B second, C third, D fourth. और फिर कुछ पूछ रहे हैं टाइमिंग टू कॉल और टेक्स्ट. I have already mentioned 8:30 p.m. Okay, so dear aspirants, solar energy development में इंडिया का क्या रैंक है? The rank is second. India has recently attained the second rank globally in annual solar capacity addition, surpassing the United States. So this is, yes, Mr. Vicky Singh ji, second is the correct answer, not third. So, और इस प्रकार से ऑपरेशन डेल्टा हंट. अब इसके बारे में एक सवाल हम आपसे ये पूछेंगे. In which of the following states
has Operation Delta Hunt, okay, has been launched. Operation Delta Hunt. A, Bihar, B, Madhya Pradesh, C, West Bengal, and D, Gujarat. So what should be the answer? Dear aspirants, if you know, okay, so the Aditya Sharma, sir, what do? You seem to be an officer. I was an officer. IAS retired हैं हम. So Mr. Aditya Sharma, Raghava, B or D. So the answer is D, Gujarat. So this is thumbs up for your correct answer, Mr. O Sittyar. O Sittyar ji, Gujarat में Operation Delta Hunt has been launched. This is launched in Gujarat. Operation Delta Hunt. So परशुराम कुमार जी आ गए. वेरी गुड इवनिंग परशुराम जी. और इस प्रकार से थोड़ा सा आपको हमने इग्नाइट किया है कि आप चीजों को किस प्रकार से. आइए चले एक दो और क्वेश्चन और उसके बाद सीधा का सीधा हम आपकी सैर कराने वाले हैं यूपीएससी के कुछ. ओके dear aspirants, consider the following statements. This is the typical style of UPSC. Consider the following statement regarding अभी क्या हुआ G7. Number 1, the group was established as a platform for economic and financial cooperation in response to the 1973 energy crisis. तो इस प्रकार से second statement, unlike the United Nations, the G7 is not a formal institution with a charter and a secretariat. Dear aspirants, अब आपको बताना है कि what should be, okay, the correctness of this statement. Now there is additional statement. It started off as G6. Is it correct? In 1975, became G7 with Canada joining as a member. Which of the above statements is correct? A 1 2, B 2 3, C 1 3, and D 1 2 3. So dear aspirants, अब आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा. If you are knowing the answer, you should write it in chat box. So yes, 3 is wrong. Mr. Aditya Sharma, it seems to me that you are preparing for UPSC examination. So it's very nice to see you here. OCTR, this is Civil Services Academy, Deoghar, Jharkhand. Myself, SK Tiwari, IAS, retired. अब यहाँ पे प्रत्येक दिन हम ऐसे प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से संभावित है, प्रोबेबल है. So dear aspirants, now consider the following statements regarding G7. The group was established as a platform for economic and financial. So dear aspirants, this is correct. Economic and financial cooperation in response to 1973 energy crisis. So this statement is correct. Unlike the United Nations, G7 is not a formal institution with a charter and a secretariat. So dear aspirants, incorrect. So now here, okay, the G7 was established in the mid 1970s, primarily in response to 1973. So yes, the answer is 1 2 3. All the statements are correct. All the statements are correct. It started off at G6 in 1975. Okay, dear aspirants, or G7 comprises Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan, and United States. Group of 7 is an informal forum of 7 or world's most advanced and industrialized democracies. While it started off as G7 in 1975. So dear third Mr. Sharma, Aditya Sharma, third statement is also correct because it started off as G6 in 1975. It became G7 in 1976 with Canada joining as a member. You became IAS through UPSC through state services.
स्टेट सर्विसेज से कैसे आईएएस बनेंगे आप? Okay, so dear aspirants, unlike the United Nations or the North Atlantic Treaty, or it means you are not concentrating. So you please leave the class. Okay, you please leave the class. You are disturbing. You are not concentrating, and concentration is must. This is prime time. Okay, it's better that you go to some other YouTube channels and ask such type of uh, questions. Okay, what are you asking me? While it started off as G6 in 1975, it's very important information. Whatever I am telling, please note it down. You will not find anywhere. एनसीईआरटी की किताब में आपको नहीं मिलेगा, तो काफी महत्वपूर्ण है. आप इसे अब तुरंत पूछेंगे, सर ये क्या आपने पहन पहन रखा है, ये सब क्या है आप सोच रहे हैं? Dear aspirants, now it became G8. This is very, very important. Please note it down. It became G8 in 1997 when Russia joined. लेकिन अभी फिर G7 हो गया because Russia is not there. However, Russia was suspended in 2014. तो ये डेट याद रहेगा, 2014. This present government came into power. Okay. आफ्टर एनेक्सिंग क्रीमिया, जब क्रीमिया को एनेक्स किया रसा ने, तो 2014 से 2014 में ये G7 से आउट हो गए. अनलाइक द यूनाइटेड नेशंस और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज इट मीन? नाटो आपने सुना होगा, NATO. द G7 इज नॉट ए फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विथ ए चार्टर और ए सेक्रेटेरिएट. सो डियर एस्पिरेंट्स, द प्रेसिडेंसी, which rotates annually among member states, is responsible for setting the agenda of each year's summit. So Aditya Sharma, I knew about Russia, so I thought G6 is wrong, but it was G8. Yes. Very good, very good. Yes, Mr. Sharma, I have ignored, but there are some people who come only to disturb. Okay, because this is very, very important. If you are preparing well, you have to perform well. Okay, so now please concentrate. Assertion and region, A and R. If you have already gone through the PYQs, you might have gone through such type of questions. Assertion, कथन, R, reason, कारण, और दोनों के बीच में, okay, ABCD type of question. Now you have to decide. Consider the following statements. Assertion A, the large scale adoption of biopolymer based smart seed technologies. साक्षी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा. Is highly vital for achieving food and economic security in India's rain-fed farming belts. एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा for your better understanding. Assertion, the large scale adoption of biopolymer based smart seed technologies is highly vital for achieving food and economic security in India's rain-fed farming belts. What's the reason? Ensuring superior seed performance during the early crop establishment phase provides a highly cost-effective and scalable mechanism to insulate crop yields against erratic weather extremes. Select the correct code. A. Both A and R are true, and R explains A. Okay, yes. Wonderful, wonderful, Mr. Aditya Sharma. This is the correct. So this is thumbs up to acknowledge your correct answer. और ये बड़ा अच्छा लगा, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया तो लगता है मेरा मिशन पूरा है. ओके, तो आइए चलें, और हम यही चाहते हैं आप क्वेश्चंस सुने, इंपॉर्टेंट नोट डाउन करें और आंसर दें. अगर आंसर नहीं है तो सीख लें.
डियर एस्पिरेंट्स, और तभी ये हमारा मिशन फुलफिल्ड है। The assertion is true because rain-fed zones dominate India's agricultural footprint and need urgent climate-proofing innovations to secure farmer livelihoods. अब ये सब लाइन आपको द मेंस एग्जामिनेशन में भी काम करेगा, क्योंकि इसी तरह के वो सवाल पूछते हैं। You will have to answer 20 questions. Section A 150, Section B 250. आपके पास जब तक मटेरियल नहीं रहेगा, लैंग्वेज नहीं रहेगी, हाउ विल यू बी एबल टू राइट? अब कोचिंग वाले तो ये नहीं बताएंगे आपको। कोचिंग वाले क्या बताएंगे? आओ पीडीएफ ले लो, दाम दे दो। वही पीडीएफ जो एनसीईआरटी में है, जो स्टैंडर्ड बुक्स में है, कोई उसमें नई बात तो वो नहीं जोड़ पाएंगे। डियर एस्पिरेंट्स, तो गंभीरता से जब आप सवाल तैयार करेंगे, उत्तर उसका बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो फिर क्रैक करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, द रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड डायरेक्टली एक्सप्लेन्स द assertion how the precise reason why deploying a smart seed coating is crucial for national food economic security is because early seedling establishment is the foundation of final crop yields. So, dear aspirants, protecting the plant during its most vulnerable developmental window minimizes production risks and input losses. So, dear aspirants, let us move to the next question. Consider the following statements regarding International Day of Yoga. 21st of June कल ही तो था, और कल फादर्स डे भी था। नंबर 1, the United Nations General Assembly adopted UNGA. United Nations General Assembly UNGA adopted the resolution to observe the International Day of Yoga following a formal proposal initiated by India in 2014. Now you have to examine this statement and find out whether it is correct or not. Dear aspirants, the second statement, the official global theme for the 12th edition of the International Day of Yoga in 2026 is Yoga for Climate Action. Is it correct? Okay, this is international theme, 12th edition. Okay, this year's Yoga for Climate Action. And the third statement, the Ministry of Health and Family Welfare acts as a single primary nodal agency for organizing the mass demonstrations of the International Day of Yoga. Which of the above statements are correct? A 1-1, B 2-3, C 1-3, D 1-2-1. So what should be the correct answer? और मिस्टर ओ सिटियार बोल रहे हैं सॉरी सर, नो नो नो, डोंट टेल मी सॉरी, बस आप कंसंट्रेट कीजिए। ओके, कंसंट्रेशन इज मस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग ए सिविल सर्वेंट। ओके, आदित्य इज टेलिंग डी और ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, वंडरफुल मिस्टर ओ सिटियार, दिस इज थम्स अप फॉर योर करेक्ट आंसर। The idea of dedicating a day to yoga was first proposed by Prime Minister Narendra Modi during his address to the United Nations General Assembly on September 27, 2014. The first statement is correct. The resolution was co-sponsored by a record 177 member states, one of the highest levels of support ever received for a UN resolution. It was passed within just 90 days of being introduced. The theme for the 12th International Day of Yoga 2026 is Yoga for Healthy Aging. AGEING. Okay? So second statement is not correct.
Third statement is also incorrect because the Ministry of Ayush, AYUSH, not Ministry of Health and Family Welfare, is the designated nodal ministry for all International Day of Yoga operations. Yes. So first statement is correct. Second and third statement is not correct. And what's the theme? Yoga for healthy aging. Dear aspirants, nodal ministry. Yes. So consider the following statements regarding the joint military exercises. Khan Quest, KHAAN, Khan Quest. Dear aspirants, यदि आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, समझ में बात आ रही कि हाँ, ओके, यहां से आप लॉन्च करेंगे और आपकी तैयारी को एक आधार मिल रहा है, स्वच्छ, सुगम, सुबोध, सरल वातावरण में, यू मे सब्सक्राइब इट. इट डिपेंड्स ऑन यू. Dear aspirants, Khan Quest, KHAN, Quest mentioned recently in the news. हाल ही में समाचारों में था. Number 1, the exercise was originally established as a bilateral training format between India and which country? Do you know? Mongolia. Second, the 2026 edition of the exercise is scheduled to take place in Ulaanbaatar. This is the capital city of Mongolia. Third, the aim of exercise Khan Quest is to prepare international military forces for joint UN peacekeeping missions in a multilateral environment. So which of the above statements are correct, dear aspirants? First, A, 1 only, B, 2, 3 only, C, 1, 3 only, and D, 1, 2 only. So what should be the answer if you have gone through this Khan Quest? The exercise is scheduled to be conducted from, okay, B, Saminder Singh ji bata rahe hain, B is the correct answer. B is the correct answer, Mr. Saminder Singh ji. Only first statement is incorrect. Okay. Second and third statements are correct. It's ongoing training up to 3rd of July 2026. 5 Hills Training Area, Ulaanbaatar, Mongolia. The exercise first started as a bilateral event between USA, okay, and Mongolian Defense Forces in 2003. Subsequently, from 2006 onwards, the exercise graduated to a multilateral peacekeeping exercise, with current one being 23rd. Okay, so dear aspirants, the Indian Army contingent comprising 40 personnel is being represented by troops from Battalion of Jat Regiment. So this exercise is Khan Quest. Okay, what's the aim? The aim is to prepare contingents of participating defense forces for peacekeeping missions. तो ये यूएन की पीसकीपिंग फोर्स के बारे में आपने देख लिया. But all attempt over. अच्छा सर, I really want to know about the army. बहुत अच्छा. और आर्मी के बारे में आप जानना चाहते हैं, अटेम्प्ट ओवर हो चुका है, तो बस अपनी जानकारी को, अपनी जिज्ञासा को, अपनी उत्कंठा को, अपनी अभिलाषा को आप उसे मोड़ दें. कहाँ मोड़ दें? टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज. ओके, सिविल सर्विसेज में यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, बस यही दो हैं. और तैयारी के मामले में अचूक तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, और आप देखें परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हंगर हॉट स्पॉट्स रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज. कल भी एक क्वेश्चन हमने लाया था. Number 1, the report is a joint publication compiled by the World Bank and the International Food Policy Research Institute. Second, as per the report, armed conflict and violence remain the primary drivers
of acute food insecurity affecting hot spots. Select the correct code. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So आप सोचें, the report is jointly produced by the Food and Agriculture Organization and United Nations World Food Program. So first statement is not correct. Sir, what is the timing of this session daily? 7:30. Mr. Sharma ji, 7:30 p.m. Okay. Or second statement is correct. It is developed under the umbrella of Global Network Against Food Crisis. Okay, only for 30 to 45 minutes, आधे घंटे का, या कभी 45 और कभी 1 घंटा भी हो जाता है, यदि आप सेशन उसको क्वेश्चन आंसर पूछते हैं. सो डियर एस्पिरेंट्स, इस तरह से ये सेशन चलता है, लगातार चलता है. आप यूट्यूब पे पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं. आई मोटिवेट द एस्पिरेंट्स जो भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उनको मैं मोटिवेट करता हूं और उनको सलाह भी देता हूं. इफ यू डोंट हैव कैपेसिटी टू गो टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अवॉइड. ओके. और आप बस अपनी तैयारी को स्वतः से, यही देश है जहां एकलव्य था. गुरु नहीं थे उनके पास, कोई कोचिंग नहीं थी, तो फिर क्या, इतिहास में अमरता कैसे उन्होंने प्राप्त किया. डियर एस्पिरेंट्स, आईएएस बनने के लिए कोचिंग की नहीं, आपकी जरूरत है. आपका मतलब आप यदि आदित्य शर्मा हैं तो आपके भीतर का आदित्य, शमिंदर हैं आपके भीतर का शमिंदर, साक्षी हैं आपके भीतर की साक्षी. अगर उसको आपने जगा दिया, इनोवेट कर दिया, ओके, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो आपको आईएएस बनने से रोक सकती है. यू आर डेस्टिन्ड टू क्रैक यूपीएससी. बस इसी की जरूरत है. और आपने देखा ऐसे ऐसे फर्स्ट चांस में निकालते हैं जिन पर आपको भरोसा, विश्वास, आप सोच नहीं सकते हैं ये कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड. सबसे बड़ी बात यही है, स्थित प्रज्ञ होना, कॉन्सेंट्रेटेड होना. और जब आप कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, रास्ता खुद बनेगा. वेयर देयर इज विल देयर इज वे. कुछ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है. सिलेबस, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, ओके, इंडिया ईयर बुक, कुरुक्षेत्र योजना, पीडी और सीएसआर. कहानी समाप्त. ओके, these are the resources, these are only these are. अब पढ़ने के लिए तो लाइब्रेरी है, एक एक सब्जेक्ट पे आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं. वर्ड्स आर लिमिटेड. यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप कई पेजेज में आंसर लिखते हैं, यहां वर्ड्स आर लिमिटेड. तो फिर आपका प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है. फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, ओके, किस तरह से आप इनोवेटिव प्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें गागर में सागर भरते हैं. दिस इज रिक्वायर्ड. ओके, सो with due respect, sir, you mean an average person can do it. Average? What do you mean by average? क्या इन्होंने लिखा है बीए फर्स्ट क्लास? आईएएस का जो आपने फॉर्म देखा होगा यूपीएससी पे साइट पे, क्या वहां पे क्वालिफिकेशन लिखा है? ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय में आप. और क्या वो लिखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऐसा लिखते हैं क्या? कहीं से भी, इग्नो से भी हो तो गया. जो यूनिवर्सिटी सरकार मान्यता प्राप्त है, बस हो गया, ग्रेजुएट आप हैं. उसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा है 90% वाले ही आईएएस में बैठेंगे, लिखा है क्या? देन एवरेज की बात नहीं है. ओके, और कैलाश जी आ गए तो बहुत अच्छी बात है. गुड इवनिंग सर. यस, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर कैलाश जी. सो डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. आपको यहां मिल गया. और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस रिमेन द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ एक्यूट फूड सिक्योरिटी अफेक्टिंग
12 to 13 स्पॉट्स। और ये आंसर भी आपने दिया, बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी, एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, बस इतना ही में आपका काम चल जाएगा प्रीलिम्स में भी। और अगर बहुत आप गहराई में जाना चाहते हैं तो फिर आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ क्वेश्चन आंसर बनाने की प्रवृत्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोरोगेशन ऑफ लोकसभा। प्रोरोगेशन, नंबर 1, लोकसभा इज प्रोरोग्ड बाय द स्पीकर। सेकंड, House cannot be prorogued while it is in session. Third, only Lok Sabha can be prorogued. Which of the above statements are correct? A 1 only, B 2 3, C 1 3, and D none of the above. So what should be the answer? अब बताइए, ये तो जरूर आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। The answer is D. None of the statements. Okay. None of the statements. The presiding officer is speaker or chairman with respect to Rajya Sabha, declares the house adjourned sine die when the business of a session is completed. Within the next few days, the president issues a notification for prorogation of the session. However, the president can also prorogue the house while in session. So all these statements are incorrect, dear aspirants. And this is, okay, 85, Article 85. Now, let us have this very minor forest produce, okay, MFP. Have you gone through this topic? MFP, minor forest produce. What is the definition? And where from will you get the definition? A, Indian Forest Act 1927. B, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition Act 2006. C, Forest Conservation Act 1980. And D, not defined. Dear aspirants, the correct answer is B, that is Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. So our answer should be B. Our answer should be B. Wonderful. Great. Dear aspirants, now here is a question from geography segment, Mr. Adav. Okay, your optional paper is, yes, Aditya Sharma, correct. Consider the following pairs: mineral, largest producer. Okay, graphite, Madagascar. Is it correct? Because you will find pair matching questions. Second, manganese, South Africa, largest producer. Third, bauxite, Guinea, GUINEA. Select the correct code. A 1 only, B 2 3, C 1 2, and D none. अब आपको आंसर बताना है. What should be the answer? Okay, pairs, mineral, and largest producer. Graphite, Madagascar. Manganese, South Africa. Bauxite, Guinea. What should be the answer? 1 and 3. But correct answer is 2 and 3. Okay? 2 and 3. ये last year आप देखेंगे, there was the same question. Same question. Manganese, South Africa, and bauxite, Guinea. Okay. This is correctly matched. So, dear aspirants, इस प्रकार से correct code is B 2 and 3. उड़ीसा की बात नहीं हो रही है, ये वर्ल्ड के पैमाने पर हो रही है. Madagascar is world leading producer of natural granite. Okay, so
आइए यहां पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं, निश्चित रूप से पूछते हैं। बाउंड्री, लेबनान शेयर्स बाउंड्री विथ नंबर 1 सीरिया इन द नॉर्थ, 2 मेडिटेरेनियन सी इन द ईस्ट, 3rd Israel in south. Select the correct code. A12, B23, C13 and D123. Dear aspirants, yes, have you got any clue? Lebanon shares boundary with 3. Okay, C is the correct answer, 1 and 3. So Lebanon is bounded to the north and east by Syria, to the south by Israel, and to the west by Mediterranean Sea. So C is the correct answer. Dear aspirants, in the context of marine ecology and oceanography, what is the primary biological consequence of suppression of coastal upwelling along the Peruvian coast during an El Nino year? अब देखिए, अल नीनो और ला नीना कल ही हमने आपको बताया है, कल ही हमने आपको इसके बारे में काफी कुछ कहा, बताया। ओके, अल नीनो क्या है और ला नीना क्या है डियर एस्पिरेंट्स, और आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझा, निश्चित रूप से ध्यान दे करके समझा। हमने इसे बिल्कुल स्पष्ट किया कि जिसमें अ होता है अल नीनो, इसका मतलब है निगेटिव। ला नीना, ला ब्रिंगिंग ओके पॉजिटिव। बस इतना समझिए, पहले पॉजिटिव निगेटिव समझ लीजिए। तो जब निगेटिव होगा तो क्या होगा? अनावृष्टि, बारिश कम होगी, ड्रॉट हो जाएगा डियर एस्पिरेंट, सूखा पड़ जाएगा। सो दैट हैपेंस ड्यूरिंग अल नीनो। अब ला नीनो में क्या होता है? वो डियर एस्पिरेंट्स उसमें बारिश होती है। ये ला अल नीना इफेक्ट 2 to 7 इयर्स में होता ही है। अब क्या है, आराम से समझेंगे। अल अ का मतलब निगेटिव मैंने बताया, कम बारिश। ओके, अब कम बारिश होगी और उसके चलते ऐसा क्यों होगा? क्योंकि समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाएगा डियर एस्पिरेंट्स। प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। भारत में आमतौर पर कम बारिश होती है, ये तो आप जानते हैं। हाउ टू गेट दीज नोट्स? यू आर टीचिंग नोट्स वंस अगेन, यू आर ओके। गुड इवनिंग तो ठीक है, थैंक यू, लेकिन थोड़ा शांति धारण कीजिए, सीखिए, समझिए और पूछ लीजिएगा। आपके पास तो मेरा नंबर है 9934739191। मैं तो रोज बताता हूं। ओके, प्लीज मेक ए कॉल और उसी पे बातचीत कीजिए, भरपूर बातचीत, जो डाउट्स हो पूछिए। भारत में आमतौर पर कम बारिश होती है, सूखे जैसी स्थिति बन जाती है, वैश्विक तापमान बढ़ने की संभावना, सूखे, गर्मी, जल की कमी, और ये 2 to 7 इयर्स के अंतराल पे आता ही है। सो डियर एस्पिरेंट्स, अल नीनो यानी गर्म पानी हो गया, मॉनसून कम होगा, बारिश कम होगी। ला नीना पानी ठंडा और बारिश ज्यादा, मतलब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो गया। भारत में आमतौर पर अच्छी बारिश और वैश्विक तापमान कम, बाढ़, भूस्खलन और अधिक वर्षा। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये 9 to 12 मंथ्स तक ऐसा रहता है। सो फायरिंग श्रीनगर में हो गया, सो कोई बात नहीं है, आपके द्वारा यह समाचार मिला। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरीन इकोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी, what is the primary biological consequence of
suppression of coastal upwelling along the Peruvian coast, South America, during an El Nino year. A rapid increase in population of cold water help forest due to excess solar radiation. B, a severe decline in nutrient availability in surface waters, leading to a catastrophic drop in phytoplankton productivity and local fish stocks. This is the correct answer. B is the correct answer. Dear aspirants, upwelling normally brings cold, nutrient-rich, deep water to the surface, supporting massive population of phytoplankton and anchovies. So, yes, कोई बात नहीं है, ये सब घटनाएं हैं, जो घटना घट रही है कुछ दिनों के बाद घटना बंद हो जाएगी, इसलिए वेट फॉर द हैप्पी डेज, गुड डेज, व्हाट आई मीन टू से। और इसी तरह से जीवन चलते रहता है। अब इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। और नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 विकसित भारत, ये भी आपको जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, इस पे क्वेश्चन हम आपको सुनाएंगे और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस पे मटेरियल हमने तैयार किया है, कल इस पे आपको हम क्वेश्चन लेकर निश्चित रूप से आएंगे। डियर एस्पिरेंट्स, नाउ लेट अस कंक्लूड दिस क्लास। ओके, 45 मिनट्स का क्लास समाप्त हो गया होने को है और आपने जितने सारे प्रश्न पूछने हैं टू द पॉइंट प्रश्न पूछेंगे। हाउ टू प्रिपेयर, ओके, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, इसी से संबंधित सवालों का जवाब हम दे पाएंगे। पॉलिटिक्स, पर्सनल क्वेश्चंस यू शुड अवॉइड। ये सब सारी बातों से आपका ध्यान भटक जाएगा। ओके, बातें तो बहुत हैं, मैं भी तो मनुष्य योनि में हूं, आपसे बहुत सारी बातें मैं शेयर कर सकता हूं, लेकिन नो, जो समय आपका है वो काफी कीमती है। माता पिता के अरमानों को पूरा करें, उन्होंने ही आपको इस धरातल पे लाया। पृथ्वी को आपने देखा किसके सौजन्य से? माता पिता के सौजन्य से। वही आपके देवी देवता है, उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति, आदर, सम्मान नित्य प्रति रखें, नित्य प्रति रखें और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं ताकि सफल हो। आप देखें कैसे आपको समझ में बात नहीं आती। अभी किसी ने पूछा आपके नोट्स कहां मिलेंगे? मेरे नोट्स नहीं होते हैं, नोट्स आपके होते हैं। आपने नोट्स बनाना है, चूंकि आईएएस तो आपको बनना है। आईएएस रेलवे की परीक्षा नहीं, एसएससी बैंकिंग की परीक्षा नहीं है। डियर एस्पिरेंट्स, यहां सब कुछ आपको करना है, इनोवेटिव स्टडी करना है। ओके, और यही सफलता का सबसे बड़ा राज है, जो नहीं समझ पाते। जो कोचिंग में जाते हैं 5 साल तक वहां रहते हैं और आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स दे कम बैक टू देयर होम विथ 1 क्विंटल पीडीएफ लेकर के आते हैं। मेरा नोट्स लेकर के आप क्या करेंगे? मेरे पास कोई नोट्स नहीं, नोट्स आपका होना चाहिए। मेरा नोट्स मेरे टाइम का था डियर एस्पिरेंट्स, तो वो अब कोई रेलेवेंट नहीं है। आज का नोट्स आपका होगा, आज का दिन आपका होगा, आज की सफलता आपकी होगी और आपकी विजय होके रहेगी। यदि आप अपने आप पर भरोसा करें, विश्वास करें, बढ़ चले, आगे निकल पड़े अपनी तैयारी के लिए, देखें रास्ता खुद मिलेगा, सफलता कदम चूमेगी निश्चित रूप से। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।